Yes, ma'am. Okay, so if you're ready, then switch on your camera and you can start your story. बच्चे कैमरा स्टार्ट कर लीजिए. मैम वो लाइट नहीं है, इसकी वजह से नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा लगेगा एकदम पूरी तरह से. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट स्विच ऑन करिए कैमरा. ओके मैम. Yes, ma'am. Can I start, ma'am? Okay. Yes, you can say. Good morning, everyone. My name is Poonam, and I want to tell you the story about believe in yourself. So, a speaker started his seminar by showing a $20 to the public. He asked the people who wants this. They were no surprised to see that all of them raised their hands. He offered to give money to one of them, but insisted that he will do something to it. He crumped the paper money and showed it again to the crowd and repeated the question. Still, everyone raised their hands. He then put the money into the ground and stepped on it, and then raised it again and offered it to the public. The public gathered there still showed interest to take the money despite saying how dirty the note was. He told the public, no matter what I do this money, you also still wanted this. You all want in favor of my offer just because the value of the money never decreased despite what I did to it. Similarly, value yourself despite the painful conditions or failures. Believe in yourself and work hard to achieve success. Value yourself irrespective of the failures or other obstacles, and don't degrade yourself just because of the temporary setbacks. Thank you. Okay. So, and the thing is, Poonam, ki your network or my network, it was not stable. So we cannot, I cannot listen to your story carefully. If anyone heard it, then well good. Otherwise, what you'll do, I can mark you on the basis of your story. But rest, आपका body language, आपका expression, ये सारी चीजों पे मैं जज नहीं कर सकती हूँ आपको. So based on that, I cannot give you MRQ for that. तो या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दोबारा एक बार ट्राई कर सकते हैं विद व्हेन देयर इज लाइट एंड व्हेन यू कैन शो योर फेस क्लियरली, ठीक है, या फिर आई विल मार्क यू अकॉर्डिंग टू दिस पोएम ओनली. ओके मैम, मैं एक बार और थोड़ी देर के बाद ट्राई करती हूँ. ठीक है, ट्राई करिए. इफ यू कैन प्रेजेंट इट देन ओके, अदरवाइज स्टोरी के बिहाफ पे आई कैन गिव यू मार्क्स फॉर दिस. ओके मैम, थैंक यू. Okay. Yes, Jitendra, you are ready for presenting your story? Okay. Yes, ma'am. Yes, sure. Start. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. My name is Jitendra Kumar. Today is story. My story is here. It is from class 10. There was a cricket tournament in a school. Many teams were involved, but my team went to the final match. I was the captain of the team. In the final match, the situation became very serious. It seemed that we had lost, but 12 runs in an over, and I was batting there, and 6 runs needed in 2 balls, but I did not give up, and hit
I hit 6 on the next ball and my team won the match. And that day I learned never to give up. Thank you. Okay. So जितेंद्र, your story didn't have a flow. ठीक है, उसमें थोड़ा सा फ्लो पे आपको वर्क करना है. स्टोरी ठीक है, मोटिवेशन है, अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा फ्लो पे आपको वर्क करना है. दैट इट शुड कम आउट एज अ स्टोरी. वो स्टोरी जैसा लगना चाहिए. रीड कर रहे हो ऐसा नहीं लगना चाहिए. बाकी सब ठीक है. ओके मैम, वॉइस ठीक था मैम, क्योंकि गला 2 दिन से खराब हो गया था. नहीं, वॉइस इज नॉट द मैटर हियर. वॉइस का कोई उतना इशू नहीं है. यू जस्ट हैव टू कैरी ऑन द फ्लो. ठीक है, जैसे आप बोलते हो, बात करते हो, वैसे ही आराम से एकदम बोलना है. तब स्टोरी बता रहे हो, जैसे आप अपने किसी दोस्त को बता रहे हो, उस टाइप का आपका स्टोरी का फ्लो होना चाहिए. ठीक है. फास्ट कर दी लगता है थोड़ा मैम. नहीं, फास्ट नहीं. देयर वाज बीच में थोड़ा अटक भी रहे थे. ठीक है, और थोड़ा थोड़ा जगह पे आप मतलब मिसमैच हो जा रहा था. फास्ट उतना नहीं था. इट वाज ग्रेट, मतलब नहीं था, लेकिन फास्ट भी नहीं था. फ्लो उतना ही रखिए, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ रखिए बस. ठीक है. ठीक है, थैंक यू मैम. ओके, चलिए. यस, नेक्स्ट. Is there anyone who would volunteer themselves, or should I call the names of the student I have listed? Okay, yes. Masoom won't be able to give today. Akanksha, roll number 6. Yes. Are you prepared for your story? Good morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Yes, you can start presenting. Okay. Good morning, everyone. I am Akanksha as well, and today's my story is the happiest moment of my life when I get a job. And the moral of this story is never discriminate between son and daughter. I feel very happy when I get a job because when I get a job, I can took off a few of my father's responsibility. I always want that I can reduce my father's responsibility. From childhood, I saw my father that how he worked for our family all day and night. He worked for very hard to fulfill our needs and wants. From my point of view, he always did his best for our family, and that's why I want to reduce my father's responsibility. I feel very proud at that time when I earn for my family and especially for my father, because in my village everyone say that uh, not go everyone say that not send your daughters of cities to read because they are daughters. Only sons are go for cities for doing anything else. But my father did it. Sent his daughters for education. That's why I want to get a job and show all the villagers that daughters also can go cities for education and get jobs. Thank you, ma'am. Okay, so again, Akanksha, there is a little work that you have to do on your flow. Other than that, story ठीक है. ठीक है. जो मैंने एरर करेक्ट करके दिया था, वो एरर्स आपने रेक्टिफाई किए. दैट इज गुड. One more thing, you are not able to express your emotions कैसे. Like आप अपना इमोशंस जो है वो स्टोरी में नहीं बता पा रहे हो. ठीक है, जैसे आप मतलब स्टोरी जब बता रहे हो तो उसमें एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे कोई थ्योरम एक्सप्लेन कर रहे हो, इस टाइप का आपका लग रहा है सुनने में. ठीक है, तो आप अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं एंड यू आर टेलिंग समथिंग दैट इज वेरी यू माइट बी वेरी इमोशनल अबाउट. तो वो इमोशन आपका दिखना चाहिए वॉइस में. ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस में, आपके वॉइस में वो चीज पता चलनी चाहिए. दैट यू हैव टू वर्क ऑन. ओके, चलिए.
So Akanksha has given yes. Annapurna, roll number 18. Batch 2 का अगर कोई student prepare है, they can raise their hand so that I know they have prepared a story for presenting here. Is roll number 18 present? Annapurna? Yes. Please switch on your camera and you can start your story. Good morning, ma'am. Good morning, Annapurna. Please switch Ma'am, on your actually, I'm camera. not prepared today. Ma'am, actually, I'm not prepared today. Can I give it in class? Next class would be your Monday. Will you be able to present it on Monday? Yes, ma'am. Okay, I'll mark it here. Okay. Okay. चलिए, ठीक है. Then anyone else who is prepared? Abhishek, roll number 24. Muskan, you have prepared. Let Abhishek present his story, then you can present yours. Okay? Yes, Abhishek, please switch on your camera. Ma'am, I am on the road, ma'am. So you're in the road. Yes, ma'am. So will you be able to present today? Yes, ma'am. No problem. Matlab, if you are able to present today, you have to switch on the camera. So will you Ma'am, be but able to switch on the camera? ma'am, it will be quite funny, ma'am. All of them will looking at me, ma'am. Then Ari, you are presenting a story. That's what the main purpose here. Okay? If they are looking at you, then how am I going to judge your body language if I don't look at you? ma'am, then I will deliver it in next class. I said, do one thing. Yes, ma'am. If you, we still have an hour. Okay. Not an Yes, hour ma'am. actually. We still have 20 minutes. So in 20 minutes, if you are able to get a stabilized area, then get there and present Yes, your ma'am. story. Okay. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, roll number 22 is willing to, ma'am, share a story, ma'am, in the class. Are they present here? 22 roll number. Yes, ma'am. So if they are willing, they can raise their hand. I allow them. Okay. Okay, ma'am. I am telling you. I am telling you. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Yes, Muskan, you can start presentation. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Today's my topic of the story is the farmer and the crane. There was a farmer and who was very worried about his crops, about his crop getting eaten by the birds. So he laid a trap for the birds. Next day, he managed to catch a flock of birds. A crane also got trapped in the net. The crane pleaded with a farmer for his freedom. The farmer retorted, "You have been found in the company of these birds who were eating my seeds, so I will not spare you." Moral of this story is bad company is harmful. Thank you, ma'am. Okay, Muskan, your story was short and very precise. So story content में कोई problem नहीं है. Presentation में because it was short is your flow was not such कि वहाँ पर कुछ खराबी निकाल पाए कोई, ठीक है? But still you have to work on a little bit on your expression. ठीक है, थोड़े expression पे काम करिए और you can improve a lot much better. ठीक है, क्योंकि presentation आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा हो सकता है. So work on your skill and you can develop your skills. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yes. Anyone else? If roll number 22 is like willing to present the story, they can raise their hand. And batch 2 students too. If you want to present, you are very welcome here.
ठीक है, आप यहाँ पर शांति से सिर्फ सुने ना, पार्टिसिपेटिव भी रहे। Okay, if roll number 22 is not willing to raise their hand, then let's move forward in the list. Roll number 92, Udit. Is he present? 92. Okay, no, I don't think he's present. 29, Brijesh. Yes, Brijesh, it's your turn to present the story. Brijesh, are you able to hear my voice? Yes. Please switch on your camera. Ma'am, give me a second. मैम 10 मिनट बाद सुना दो तो चलेगा। क्यों बच्चे? Is there any issue? मैम थोड़ा सा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है एक। Okay. Okay, so Poonam, are you willing to tell your story again? Poonam, would you like to give another try for your story? Chaliye, till the time others are preparing, we'll do one thing. Yes, Manish. मैम हम अपना स्टोरी मैम दे सकते हैं क्या? हम दे चुके थे मैम, बट उस टाइम मेरा कुछ अच्छा नहीं था, तबीयत ठीक नहीं था, तो मैम आप दोबारा देना चाहते हैं? यस मैम। Sure. You Ma'am, can can I start. start? Good morning, everyone. I am Manish Kumar, and I have a story that the story is about myself, my coaching life, and the moral of the story is you should trust yourself. And it is a story. It was a story about 3 years ago when I was in 9th class, and it was my first day of coaching class, and I went to my coaching. The teacher came and he started teaching. He was started teaching new topic, new chapter. That's name is trigonometry, and I was enjoy that topic, but I was so nervous. It was my first day, and every student understood all the things, but I was nervous. And after some days, the teacher told all the classes, all the students told to all the students that next day a test was came from the topic from the trigonometry chapter, and I was so nervous that how I have prepared myself, how I tried, how I, but I believed in myself that I will do my better. I came to my home and I revised more than 4 times on that chapter, trigonometry, and I feel so happy that I have gained some confidence, so that I will do my best in tests. The next day, the test was came. The teacher distributed all the student. The teacher distributed question papers and answer sheets to all the students, and everyone started writing, and I also started writing. And the one student in this coaching classes that he was very brilliant student in that coaching, and everyone know that he will do best. He will do he will got first prize in that test. But when the test result was came, that day I was so nervous, and I feel so confident that
I will do my best, and I will do my best. And the teacher announced the name, and the first prize is me, first prize for me. And everyone shocked that how it is possible that the student in that coaching, the topper of the student in that coaching, he got only 9 marks out of 20, but I got 20 out of 20. And that was my first day, first first day that I feel so happy in my coaching classes. And I told the last thing that you should trust yourself, that you can do anything. That's all, ma'am. Thank you. Okay, Manish, I am seeing a little bit improvement from the last story. ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है. ठीक है, आपका हो सकता है आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हो, बट स्टिल लिटिल बिट ऑफ emotions were there in your voice, and थोड़ा अभी भी अटक रहे हो, but still I believe कि थोड़ा बहुत practice one thing I want to say, ma'am. Ma'am, one thing I want to say, ma'am. I prepared that story in only 6 minutes. Yeah, that is very good. आप जैसे भी prepare करो, that's what I'm telling you. Once you are getting inside your head, एक बार दिमाग में चला गया ना कि क्या बोलना है, तो उसके बाद फिर you are able to express with a little bit emotion. ठीक है. मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर आपका जो इमोशंस रहता है ना, वो आप तभी मैच कर पाते हो व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट फ्रॉम हियर, ठीक है, टू हियर. ठीक है, जहां पर आपने पेपर में लिख दिया उसको एंड यू आर रीडिंग इट लाइक अ न्यूज़पेपर, तो वहां पर फिर वो इमोशंस चले जाते हैं, एंड देन यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट योर ऑडियंस विद योर स्टोरी. ठीक है, एंड राइट नाउ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी और मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको नहीं भी ध्यान होगा उसने भी कम से कम आधी स्टोरी सुनी होगी. सो दैट इज हाउ यू कनेक्ट योर स्टोरी विद योर ऑडियंस. ठीक है, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा. तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप पार्टिसिपेटिंग. ओके okay, ma'am. I will do my best next time. ओके, वन थिंग, डू एवरीवन, जिसने भी अभी तक स्टोरी बताया है, कैन दे रेज देयर हैंड, जिसने अभी तक स्टोरी बता चुका है एक बार भी. ठीक है, कैन दे रेज देयर हैंड. Also, batch 2 students, if you want to participate, you are very much welcome. लेकिन ये मत समझिएगा कि just because I am giving you options here to participate, हमेशा option नहीं रहेगा. Next activity you have to be participative, क्योंकि यहाँ बिना participate किए आप कुछ सीख नहीं सकते हैं, समझे? Okay, so I believe rest of you are marked. चलिए ठीक है, hands lower कर लीजिए सब कोई. And those students who are ready to present their speech or their story, they can raise their hand. कुछ बोलना है मनीष आपको? Ma'am, can you tell the marks about how was my marks? How is that? It is good or not? So I cannot tell. Ma'am, it is good or not? Everyone's is good. Everyone's is good. ठीक है. You know me, I'm not going to fail you purposely. और यहाँ पर फेल के पास था तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं. It is an intern, just an assessment, monthly assessment. So I'm just assessing how many people are participating, how many people are responding to my calls. ठीक है, according to that I'm giving you marks. Yes, Udit 92. Is he still present in the class? He did logged in.
Roll number 92, batch 1, Udit. Yes. Are you ready to present your story, Udit? Udit and Brijesh and Abhishek. You have less than 10 minutes to present your story. Sequentially करिए, आप जैसे करिए, but you have to present today itself. आपके पास 10 minutes है, 8:50 हो रहा है, 9 o'clock तक you have to present as it is. Yes, Abhishek, are you ready to present? Ma'am, I will deliver it in next class. Ma'am, it is quite weird, ma'am. If I will switch on camera on the road, ma'am, while walking, ma'am, it will be quite weird in front of the people. All right. Anyone else? Udit and Brijesh. Brijesh, are you ready to present? Okay, again, I'm telling you, Udit, Bache, you are present in the class. Please respond to the call. And one more thing, यहाँ पर जितने rest of the students जितने present हैं, 1 minute, Brijesh. Rest of the students जितने present है, especially batch 1 student, जिन्होंने अभी तक story present नहीं की है, ठीक है? They have till Monday. मंडे को मुझे सबकी स्टोरीज चाहिए. यहाँ पर जितने लिस्ट में नाम लिखे हैं उतने नहीं, हर एक बच्चा जो बैच 1 का है एटलीस्ट. बैच 2 स्टूडेंट्स, योर MRQs आर नॉट गोइंग टू गो अप फॉर जनवरी, क्योंकि ये आपकी पहली मंथ की क्लास है जिसमें से आधी क्लासेस हुई भी नहीं है. तो योर MRQs विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम February. ओके, यस सुजेश. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, everyone. My name is Brajesh, and I am presenting a story of my life. My life is mixture of moments, some happy moments and others not so much, but regardless, these moments have made me the person that I am today, and the person that I am today, and I don't regret anything that had happened. I considered myself a strong and a very determined person. I have dreams to fill the world and I am willing to do attain those dreams. My motivations I I inherits from my family, more specifically my father that I love so much. Thank you, ma'am. Okay. So one thing, Brajesh, work on your expressions a little bit. ठीक है? मैम अभी Story सो तो के उठा हूँ मैम, क्या एक्सप्रेशन निकले? so that is not how you attend the classes, बच्चे. ठीक है? That is not how you attend the classes. Classes should be at 8 and you have to be prepared for the classes. ठीक है? Okay, ma'am. And that means Next time. preparation prior to that. ठीक मैम है? नेक्स्ट टाइम तक. Okay. And one more thing, please try to place eye contact with the camera when you are presenting it on virtual world. आपके पास सिर्फ एक यही चीज है, कैमरा, that you have to look in. Anyone else? Anyone else who would like to present their story? Yes, फालतू के आप लोग मैसेज ना करा करें यहाँ चैट में, ठीक है? कम से कम जो क्वेश्चन पूछते हो वो तो सही पूछ लिया करो. What are you doing? Not why are you doing? Yes, बैच 2 स्टूडेंट, आप लोग का नेक्स्ट मंथ का जो एक्टिविटी रहेगा, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी इंक्लूडेड इन दैट. ठीक है? सिंस देयर द अटेंडेंस आर अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स. ठीक है? तो यहाँ पर हर क्लास में हर बच्चे को बोल पाना पॉसिबल नहीं होगा, बट स्टिल आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन एनी एक्टिविटीज दैट आई एम गोइंग टू डू इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है? बहुत बड़ा एक्टिविटीज हम लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज द अटेंडेंस इज वेरी हाई and there will be like a very mashup kind of situation if I don't handle it properly. So basically you will be presenting here speech, story and maybe debate.
ठीक है, that's the only thing that we are able to do here in the virtual classes. All right, so if that not possible, then आपको यही है कि अभी मैं यही कह रही हूँ कि अभी आपको अपने पास टाइम है that you can present on your own, because if I'm going to give you options, then that options will be strictly followed. अगर मैं टॉपिक दूंगी किसी स्पीच का तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, उसी के टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है. एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, इफ आई एम गिविंग यू अ टॉपिक, यस प्रियंका. Ma'am, today I'm not feeling well, but I have written my one of my story, another story, and want to deliver it in the next class. Can I, ma'am? We'll see if there is time, because I have told other students they have to present. If they are not presenting, if they are silent like this, then we have time, then you can present. Okay. Okay, ma'am. If there will be a sufficient time, I can present, ma'am. Okay. Thank you. Yes. Anyone else? Okay. Yes. Rest of the students जो हैं जिन्होंने present कर लिया है उनके पास भी option है that you can present another story if you would like. ठीक है. देखो, स्टोरी टेलिंग मैंने क्यों करा रही हूँ, बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज द वन थिंग इन पब्लिक स्पीकिंग. जब आप पब्लिक के सामने बोल रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपके लिए इमोशनल होना या फिर उसको इमोशनली कनेक्ट करना बहुत आसान होता है. व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, इट माइट बी अबाउट योरसेल्फ और समवन एल्स, दैट डजंट मैटर, बट स्टोरीज आर समथिंग दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड विद योर ऑडियंस. तो अगर आप मैं सिर्फ स्पीच देने बोलूंगी तो फिर वही इमोशनलेस स्पीचेस मुझे सुनने मिलेंगे, मुझे पता है. दैट इज व्हाई आई हैव कम अप टू दिस स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी. ठीक है, लेकिन इफ यू वांट टू बी इन, अगर आपको अपनी फ्लुएंसी पे काम करनी है, ठीक है, इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट, डू वन थिंग, कुछ एक्सरसाइजेस आपको अपने आप भी करने होंगे. स्टार्ट रीडिंग अलाउड. ठीक है, जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट करिए, और जब आप सुनने में आपको लगे कि आपका फ्लो जो है वो स्मूथ हो गया, ठीक है, लाइक स्मूथ मीन्स व्हेन आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड व्हेन आई से अ सेंटेंस इन इंग्लिश, there should nothing that you are not able to understand, plus there should nothing be something that is like if as if I'm reading a sentence from a newspaper, or I'm reading and telling you something. It should not sound like that. When it starts sounding as if you are talking to some person, then your fluency is getting better. Okay, so I hope you understand all those things. और इस चीजों को, इन एक्टिविटीज को आप अपने डेली लाइफ में डालिए. ठीक है, इवन इफ यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, इवन इफ यू आर स्टडिंग फाइनेंस, दैट डजंट मैटर. आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आउट लाउड यानी कि जोर से रीड करने का हैबिट जो है आपका वो डालिए. उससे आपका फ्लुएंसी बहुत अच्छा होता है. ठीक है, फ्लो जो होता है वो स्मूथ होता है. सेकेंड थिंग, ट्राई लिसनिंग टू द न्यूज एवरी डे. ठीक है, पढ़िए नहीं, लिसन करिए, यानी कि न्यूज चैनल्स का जो यूट्यूब पे लिंक होता है या फिर न्यूज चैनल के जो ऐप्स होते हैं उन्हें सुनने की कोशिश करिए. बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज कि न्यूज एक ऐसी चीज है कि अगर आप इंग्लिश में सुनते हैं तो आप कम से कम कैप्शंस में पढ़ के समझ सकते हैं कि वो न्यूज किस बारे में बात की जा रही है, क्या कहा जा रहा है. लर्निंग अ बेटर वोकैबुलरी इज, you can say it is the best opportunity by listening to the news. आपकी vocabulary बहुत बढ़ती है, plus the finance news is going on always in English. तो आपका वो सब्जेक्ट भी है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो इट विल बी. बच्चे, मूवी देखने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, मुझे पता है. ठीक है, इसलिए आई नेवर सजेस्टेड एनीवन टू वॉच इंग्लिश मूवी. ठीक है, मूवी देखने से तुम एक तो वो डाउनलोड करोगे हिंदी में और ऊपर से कैप्शन लगा के देखोगे. ठीक है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हारा, ना वोकैबुलरी बढ़ेगी, दिमाग में कचरा और अलग से जाएगा. तो इट इज बेटर कि लिसन टू न्यूज. ठीक है, न्यूज सुनिए. इंग्लिश में फाइनेंस और मार्केटिंग की मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज जो होती है आपकी इंग्लिश में आती है, तो वो आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा, और प्लस आपको इंग्लिश जब आप सुनेंगे वोकैबुलरी बढ़ेगी. उस वर्ड्स को रिपीट करने की कोशिश करिए, उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए. दैट्स हाउ यू डेवलप एनी लैंग्वेज. जो सबकॉन्शियसली आपने हिंदी सीखी है जैसे ना, वैसे ही आपको कॉन्शियसली जबरदस्ती वही स्टेप्स फॉलो करके इंग्लिश सीखो,
तब जाके आप उतना फ्लुएंट हो पाएंगे जितना आप हिंदी में हैं। अंडरस्टूड? बच्चे आप रीड कर सकते हो, बट द थिंग इज कि व्हेन यू आर स्टिल रीडिंग आपको पता नहीं चलेगा व्हाट विल बी द एक्चुअल फ्लो, व्हाट शुड बी द एक्चुअल फ्लो। ठीक है, जब आप सुनेंगे उसके बाद आप रीड करेंगे, दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव। पहले सुनिए स्पीच, जो न्यूज चल रही है उसको ऐप पे या फिर न्यूज चैनल पे सुनिए, उसके बाद उसका आर्टिकल पढ़िए, देन you will be able to understand what they are talking about and then try to give a review on your own in English। मतलब जो चीजें आपने उस न्यूज के सीखी वो सारी चीजें आप खुद किसी और को बताइए। यहाँ क्लास में आके आप बोल सकते हैं whatever you learned from that news। 1 minute। yes, so as I was telling, यहाँ पर आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर लर्निंग एक्टिविटीज ये सारी हैं। ठीक है, एंड इफ यू वांट English movies or watch English movies, that is absolutely all right। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ सीखने के तौर पे आप ऐसा कुछ देखिए जिससे आपको सीखने मिले। थोड़ा जो क्रिएटिव माइंड आपका ठप पड़ा हुआ है वो चलने लगे, ताकि खुद की स्टोरी बनाने के लिए आपको 10 बार सोचना ना पड़े कि क्या बोले क्या नहीं बोले। ठीक है, तो लेट मी जस्ट take the attendance and then we can end this class here। और जितने स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने आज प्रेजेंट नहीं किया है, स्पेशली दोज हु हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, ठीक है, उनका तो मैं नंबर आज काटूंगी। तुम्हारा मंथली असेसमेंट आज कटेगा जो रिस्पॉन्ड एटलीस्ट नहीं किए हैं। यस प्रियंका। Ma'am, I think most of the students have joined, but they might be sleeping right now. That's why they are. That is not my problem। if they have joined then they should have been responding। Yes, and ma'am. especially when I have already given the list of the students कि जिनको यहाँ पर present करना था, उसके बाद भी if you are not responding, that is your responsibility that you are not upholding। Okay, so attendance has been taken। so if there is any doubt, batch 2 student जो हैं, you are listening to all the students who are presenting here। आपको लग रहा है कि if you can present a much better story or if you want to do something, some other activities, you can give me a suggestion। कोई ऐसा एक्टिविटी आपको लगता है जो आप क्लास में कर सकते हैं which will be much better for your presentation skills development or your English development, then you can give suggestions too। rest of the things we can discuss in the next class। चलिए, we'll meet in the next class and attendance I have taken।